and welcome to Gyanm College of Competition. Here we are again with daily current affairs. So first, a little progress each day adds up to big results. So remember this. Now we are starting with the news. The Press Council of India has awarded this year's Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism in Rajasthan Patrika Group Chairman Gulab Kothari. सो गुलाब कोठारी को ये प्राइज जो है वो अवार्ड जो है वो दिया गया है एंड अवार्ड का नाम है राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड. द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल प्रेस डे ऑन 16th November. Right? The award have been instituted to recognize outstanding contribution of journalists or photojournalists of the country in print journalism. Raja Ram Mohan Roy was the founder of Brahma Samaj and he was given the title of Raja by Akbar II. Akbar II जो था वो मुगल था और उसने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था. एंड राजा का टाइटल इसलिए दिया था बिकॉज अकबर II अपनी पेंशन बढ़ाना चाहते थे और मुगल्स की पेंशन ब्रिटिशर्स बढ़ा नहीं रहे थे और उनसे बात करने के लिए उन्होंने राम मोहन रॉय को भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात सिर्फ राजा से करते हैं. और अकबर ने राम मोहन रॉय को कुछ गांव भेंट किए और उसके बाद उनको राजा बना दिया वहाँ का और उसके बाद उनका नाम पड़ गया राजा राम मोहन रॉय. He was also known for his efforts to abolish the practice of sati and child marriage. तो ये जो बातें की हमने ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में थी. और राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जो है वो मिला है गुलाब कोठारी को जो कि राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन है. ओके, नेक्स्ट न्यूज इज see, this is Raja Ram Mohan Roy and he is Gulab Kothari. The food regulator FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, released draft regulations for school children. A complete ban was imposed on the sale of soft drink, potato, wafers and other junk food within 50 meters of school campus. And this is a really good move by the government or by FSSAI. The food that are referred as HFSS, high in fat, salt and sugar, right? High in fat, salt and sugar cannot be sold in school canteens, mess premises and hostel kitchens. The school campus should be converted to Eat Right School, ensure safe and healthy food. The school should take help of nutritionists and dietitians in preparing menu for children periodically. Okay? सो ये सब जो है वो बच्चों को की हेल्थ के लिए किया गया है ताकि बच्चों को जंक फूड से दूर रखा जा सके. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट FSSAI, right? So FSSAI is responsible for protecting and promoting public health through regulations and supervision of food safety. Rita Toita is the current chairman of FSSAI and Pawan Kumar Agarwal is the CEO. The Food Safety and Standard Authority of India is a statutory body. So remember this guys, this is a statutory body. You know that statutory body वो होती है जो किसी एक्ट के अंडर बनती है. Under Food Safety and Standard Act 2006, the FSSAI appoints Food Safety Authority on state level as well. तो ये भी याद रखें. FSSAI functions under the administrative control of Ministry of Health and Family Welfare. तो ये उसके अंडर वर्क करती है. Lay down science-based standard for food articles of food to regulate manufacture, storage, distribution and import and sale of food and to facilitate safety of food. So हो सकता है आपको FSSAI के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कि उसके फंक्शन क्या है. So remember, it lay down science-based standard for food articles and regulate manufacture, storage, distribution, import and sale of food, and it also facilitates safety of food. Next news is the National Mission for Clean Ganga organized the Ganga Utsav in Major Dhyan Chand Stadium in New Delhi to mark the 11th anniversary of Ganga being declared as National River. Alright, so it was organized in coordination with Union Jal Shakti Ministry. ये नई मिनिस्ट्री है, हमने अपना वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया है टू जल शक्ति मिनिस्ट्री. The event was organized in a bid to create awareness and gather public participation in effort to clean river Ganga and its tributaries. See, सरकार एक बार गंगा को क्लीन कर सकती है बट उसको क्लीन रखना, मेंटेन करना वो लोगों के ऊपर है.
राइट। पर हाँ, इसमें एक और भी बात है दैट अभी तक सरकार एक बार भी क्लीन नहीं कर पाई है गंगा को. It is celebrated every year on 4th of November because Ganga was declared as the country's national river on this day in 2008. So remember, 4th of November is celebrated as Ganga Utsav. ठीक है, बिकॉज इस दिन हमने गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था 2008 में. नेक्स्ट, दिस इज गंगा. सी, गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, राइट. एंड उत्तराखंड में ये जो दो हेड स्ट्रीम्स इसकी दिखाई दे रही हैं, दीज आर भागीरथी एंड अलकनंदा. भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, दिस रेड फर्स्ट रेड पॉइंट, दिस इज देवप्रयाग. ओके, एंड उस तरह से, इस तरह से ये जो गंगा है उत्तराखंड से यहाँ यूपी आती है, यूपी के बाद फिर वो बिहार जाती है, ये सारा यूपी का एरिया है. ठीक है, ये इलाहाबाद है जहाँ पर यमुना आकर गंगा से मिलती है और यहाँ कुंभ मनाया जाता है. देन दिस इज़ पटना, लाइक ये बिहार का रीजन है. उसके बाद गंगा जो है वो वेस्ट बंगाल आ जाती है, राइट, और वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, यहाँ इंडियन ओशन में मिल जाती है. सो ये उत्तराखंड से बे ऑफ बंगाल तक चलती है. सोर्स जो है वो गंगोत्री है जो कि यहाँ ऊपर उत्तराखंड में है. एंड जो माउथ है, आई एम सॉरी, दिस शुड बी MOUTH, इट इज़ इन बे ऑफ बंगाल. एंड लेंथ जो है गंगा की वो है 2525 मीटर्स. सो रिमेंबर दिस अबाउट गंगा. हमने उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं की है, हम ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बट ये आपको याद होना चाहिए कि ये उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है. NASA's Vega 2 has exited heliosphere and has entered interstellar space. So guys, interstellar होता है तारों के बीच में, between the stars. So जो NASA का Vega 2 है वो interstellar space में पहुंच चुका है. And this is the second mission जो हमारा interstellar में पहुंचा है, लेकिन ये बहुत सारे काम करने वाला first mission है, right? Voyager 1 हमने पहले भेजा था, अब Voyager 2 है. So it is now at 11 billion miles from Earth, right? 11 billion miles Earth से दूर है. Vega 2 is the first spacecraft to study all 4 planets together, including Jupiter, Saturn, Neptune, Saturn and Uranus. इन चारों प्लैनेट्स को एक साथ स्टडी करने वाला Vega 2 जो है वो फर्स्ट ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा. एंड इट इज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट डिस्कवर्ड 14th मून ऑफ जुपिटर. इस स्पेसक्राफ्ट ने इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, इसने यूरेनस को, नेपच्यून को स्टडी करने वाला ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था. ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम. और ये जो है ये प्लाज्मा है ड्यू टू द सन. एंड ये सारी हेलियोस्फेयर है जहाँ पर ये सन का प्लाज्मा है, राइट. और ये हेलियोपॉज है, दिस इज़ द एज ऑफ द हेलियोस्फेयर. और इसके बाद ये जो स्पेस है ये इंटरस्टेलर स्पेस है, ये हमारे सोलर सिस्टम के आसपास का स्पेस है. और ये इंटरस्टेलर है, तारों के बीच में, राइट, बिटवीन द स्टार्स. तो ये Vega 1 है और ये Vega 2 है इधर, और इस तरफ से ये हमारे 4 प्लैनेट्स के ऊपर नज़र रखेगा. सो गाइज, ये हमने इसलिए बनाया था ताकि हम बाहर से पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को स्टडी कर सकें. Next news is the NASSCOM report on Indian tech startup ecosystem said that India continues to third largest startup ecosystem after China and USA. राइट. सो इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप जो हैं अब बढ़ रहे हैं. स्टार्टअप, इंडिया हैज़ एडेड मोर देन 1300 टेक स्टार्टअप इन 2019 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. द नेवीज ऑफ इंडिया, the next news is the navies of India and Indonesia are holding bilateral naval exercise called Samudra Shakti. So remember this कि Indian Navy और Indonesian Navy के बीच में जो एक्सरसाइज है उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति इन बे ऑफ बंगाल, जो कि 6 और 7 नवंबर को होगा. India and USA are to jointly conduct Tiger Triumph, the first ever tri-service amphibious exercise. तो ये tri-service exercise होगी जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयर तीनों पार्ट लेंगी और इसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ. It is to be conducted in Visakhapatnam and Kakinada, Andhra Pradesh. It includes field training and events that simulate humanitarian assistance in disaster time. Okay, so ये हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूएसए की टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज की. Okay, this was the news about India and Indonesia, and that was in these this is the news about startup. Union Food Processing Industry Ministry Harsimrat Kaur Badal and Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched the
3 books on teachings of Guru Nanak Dev at Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College in New Delhi. So ये वो 3 किताबें हैं, Guru Nanak Bani, Nanak Bani and Sakhya Guru Nanak, right? So Guru Nanak Bani जो है, it is a book contained various verses from original Bani of Guru Nanak Dev, which has been collected theme wise. Nanak Bani, the book is collected of 5 prominent writings of Guru Nanak Dev, and Sakhya jo hai, the book is based on the life stories of Guru Nanak Dev. Okay, National Steel Policy that was released on November 8, 2019 aims at developing globally competitive steel industry. It aims at creating 300 million tons of steel per annum by 2030. It also promotes the 6R principle जो हमारी स्टील पॉलिसी है. It was released recently at ये 8 नवंबर को रिलीज की गई है एट डेवलपिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टील इंडस्ट्री एंड द एम क्या है, जो 300 मिलियन टन स्टील पर एनम बनाना 2030 तक. It also promotes 6R principle. It includes reduce, recycle, reuse, recover and remanufacture and redesign. So remember पहले 4R होते थे, अभी 6Rs हो चुके हैं. So बाकी के 2R जो हैं वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं. ठीक है. So reduce, recycle, refuse, recover, remanufacture and redesign. PM Modi is to attend 11th BRICS summit that is to be conducted in Brazil. Okay, ये ब्राज़ील में होगा on November 13, 2019. So remember 11th BRICS summit is going to be held in Brazil. Okay, important questions लेते हैं. Which country has recently approved the world's first drug for Alzheimer's disease, GV971? So it is China, guys, right? Next question is, India's CO2 emission growth poised to slow sharply by what percent in 2019 according to an analysis published in Carbon Reef, right? So it is 2%. Next is, the first ever tri-service exercise Tiger Triumph is being conducted between India and which country? So ये अभी हमने पढ़ा था. It is India and USA. Harmonized System Code 5206, which is in news recently, associated with which field? So it is associated with खादी. Alright, so देखिए हार्मोनाइज सिस्टम जो है वो नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम है और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था फॉर खादी. Okay, थैंक यू, सी यू अगेन.